So we are live on YouTube as well. So, Namaskar. Good evening, everyone. This is Vimal Kumar from Shiksha Sopan IIT Kanpur. And it is my pleasure to welcome you to this NAEST webinar on the basic working principles of modern microscopes presented by Dr. Rajesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics at IIT Indore. This webinar has been organized by Shiksha Sopan, Indian Association of Physics Teachers, IAPT, and National Anveshika Network of India. Dr. Kumar received his bachelor's degree in physics in 2002 from Ramjas College, University of Delhi, and received his master's and PhD degree from National Institute of Technology, Delhi in 2004 and 9, respectively. His research works involves around electrochromic devices, physics, and Raman spectromicroscopic studies to understand stable scale physics at nano resin and to leverage Raman microscopy to understand interdisciplinary research areas of physical chemistry, biophysics, and civil engineering. He also works in the areas of herbal electronics, electrochromic sensing, and energy storage device fabrications with a long-term goal to understand the role of organic and inorganic materials in increasing device efficiency using spectroscopic and electrochemical methods. He received Best Teacher Awards 2013, Best Technology Development Award 2020, and Best Research Paper Award 2021 from IIT Indore. Dr. Kumar is a member of American Chemical Society, Indian Laser Association, and Material Research Society of India. Dr. Kumar has published 29 articles in American Chemical Society journals, including invited prospectives and research articles. Professor Kumar has been recognized by the American Chemical Society for being in the top 3% highly cited authors 2019 and 20 from India. Through this webinar, he will share his knowledge and expertise on the basic working principles of some modern microscopes and their applications. The advancement of microscopy has revolutionized our ability to observe the microscopic world and has led to significant advancements in and nanotechnologies. This webinar is an excellent opportunity for students, researchers, and professionals to enhance their understanding of microscopy and imaging and to learn from an expert in this field. I hope that you can find this webinar informative and insightful. Once again, I welcome Dr. Kumar and thank you him for sharing his time and expertise with us. Over to you, sir. Thank you. Thank you. Thank you for this introduction, and it's really an honor to be part of this talk. And I will start with the thanks to Professor Verma sir, who invited me for this. And I remember that I have to talk about some science and research. Dhanyawad sir. Some science and how the principles and how we have how the simple basic concept can lead to such an immense tool which can be used for discovering so many science and technology, and that's how it grows. And I also remember that some poetry angle has to be there, so that also I will take care of.
And the only thing is the poetry part it is in Hindi, but rest of the things will use mixed language, because I understand it comes from a pan India audience is here who is listening to us. So let us start. I hope you all can see this window, and I will put it in the full screen mode. So this is just the simple title slide that you see: modern microscopes and their basic working principles. These are the photographs from IIT Indore. This is the plain outline that what we are talking about, what we will talk, and then we will also see the what is microscopy, what do we mean by this, and optical microscopy to electron microscopy. We all know how we got introduced to electron microscopy. I remember from the biology book, I got first introduced to electron microscopy. That's a story. I will discuss that also. And we are proud of this. This is some advertisement. Just then I will come to the scientific content. We feel proud to be from the cleanest city in India, which is for consecutively sixth time, 6 years. And this is one of my favorite slides where I start by thanking all the members of my research group, which is materials and device laboratory, which is also we call it a MAD lab, materials and device laboratory. Thank you, thanks all of the students. And in case you are interested, these two videos are available on YouTube. This is in completely in Hindi, which is done for Ek Bharat Shresth Bharat, basic simple concepts which basic physics enthusiasts. So you will like these two. Uh, this is the average which Vimal ji just mentioned. What are the things that we do? We do Raman spectromicroscopy and electrochromic devices, and then some other little bit stuff as an exploration, and so that we can reach to the newer domains. Again, these are all advertisement. So I will just first introduce this one poetry poem, and then I will start with the set the mood, and then we'll come to the the microscopy. Then at the end again, for some poetry will be there. So how do we say? Let us see. What are we discussing today? हम आज क्या करेंगे? इसके लिए ये कविता के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि आज हम क्या करेंगे। मिलन सौहार्द की बातें करेंगे, प्रेम की बातें, त्वरण बल चाल की बातें, इनर्शियल फ्रेम की बातें करेंगे, कल डेराइव सूत्र देखेंगे, नियम कल ही, आज की शाम होंगी बस गणित में गेम की बातें. So just to set the mood, when we talk about microscopy, what actually we are talking, that how things look, right? What we want to see, we can see it through a naked eye, or we see at a more resolution, more resolved aspect, which we can do through microscopy. And how much we want to resolve, or how magnified view we want to see, that is done through microscopy. And why it is important, why we are worried that how it looks. See, it is the same photograph of me only, the red circle and the blue circle, but here the appearance is completely different. This slide is there only to mention that appearance matters, and appearance is something which we wish to see through microscope. The surface, how it, the coverage, what are the things on this? Okay. So what is a microscope? Microscope is a tool that helps us in doing microscopy, and microscopy is to get magnified image in which structures may be resolved. What do we mean by that? That we will talk. And this resolution of the microscope should be at the level which we cannot do through naked eye, because
the faculty that we have, the naked eye we have, we can see. But how closely and how zoomed we can see, and how much we can resolve between the things. देखिए कुछ चीज हम देखते हैं अब अपनी आंखों से देखें और उसको लेंस से देखें तो फर्क दिखता है, छोटी चीज और बड़ी चीज का फर्क, और कितने पास पास चीजें हैं और उसको हम कितना अच्छे से फैला के देख सकते हैं बड़ा करके। पहले हम जरा देखें कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम देखना चाहते हैं, तब पता चलेगा कि उसको देखने के लिए हमें कैसी चीज चाहिए। So this is just a simple scale that we talk about. Starting from the right hand side is a tennis ball. We know this is a size, typical we can say 10-15 centimeters or so. Accordingly, a grain of salt we can see, right? We know the size, it's approximately 1 millimeter or less than 1 millimeter. A human hair, we know this again in some micrometers. This is how typically it is written. means micrometer. And then these are just leave this. This is called MEMS devices, which is done at the in the integrated circuit chips. This is very known thing, which is a red blood cell, which is even smaller than these features on the semiconductor. We know this bacteria, and this is what I was talking about, that how I heard first the electron microscope. If you all remember, किताबों में रहता है ना, एनसीईआरटी की किताब में या किसी भी किताब में बायोलॉजी में, ये बैक्टीरिया का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा लिया गया चित्र देखा होगा ना। तो यही बैक्टीरिया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी वहीं पहली बार देखा था, मुझे याद नहीं छठी क्लास होगी या पांचवी सातवीं ऐसे कभी होगी। तो ये बैक्टीरिया का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा लिया गया चित्र, तब समझ नहीं आया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी is the electron microscope, right? We will talk about different electron microscopes also. So this was the bacteria, the image of bacteria, which first I remember this word electron microscopy. So we'll talk about it. And then we all going smaller on this scale, the virus. You can you can remember this virus very recently. We all of us suffered because of this. And these are carbon nanotubes. This is the whole complete world of nanoscience and nanotechnology. Most of you, at least the master students, have encountered, have come across this term, the nanoscience and nanotechnology. We all know. So carbon nanotube is one of the components in that, and then the simpler molecule, a water molecule or atoms. So we have now microscopy. A tennis ball, of course, we can see through the normal eyes. अपनी आँख से इसको देख सकते हैं, नमक को भी देख सकते हैं, पर इतनी अच्छे से, इतनी बारीकी से नहीं देख सकते। एक अपने सिर के बाल में इतना कुछ है, ये हमें नहीं पता। सेम चीज हम सारी चीजें आंखों से देखते हैं, पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप से जब देखते हैं तो वो कैसा दिखता है, थोड़ा उसको समझेंगे और ऐसा कैसे दिखता है। See, you remember this at the top left of this is a human hair, which is the normal optical photograph, or this is something what we see through our eyes. The bottom left image, this is how this hair oil and all these shampoo advertisements show this. But this is not how the hair looks, and this is not how the hair actually are. Okay, they look very smooth and cartoon kind of thing. If you, I'm sure you all remember this kind of thing in the advertisements. Now look at the right hand side. See, the right hand side, this yellow kind of picture is the same human hair when it is seen in a compound microscope, compound optical microscope. We'll just see. Most of us know, all of us know how they work. And the same thing, the same human hair, when it is looked in a scanning electron microscope, or for now we'll just take this as electron microscope, they look like this. See, देखो जैसे बांस जैसा है ना, एक जैसे आप फिर ऐसे कहें जैसे वो आइसक्रीम वाला कोन, एक के अंदर एक फंसा के रखते हैं, तो इस तरह का यहाँ पर ये दिख रहा है. What is the difference? It's the same eye when we see through our eyes, same hair, same hair which we see through our eyes, same hair when we see it using optical microscope, and this is again the same
in electron microscope. Now look at the detailing that we can see when we use electron microscope. How this happens, let us look at this. So before we go, we will take the example of optical microscope and let us define a few terms. Here we are talking about the resolving power of a microscope. A microscope which can revolve between the two details. The two details on a surface. एक surface है, उस पर दो साथ साथ जैसे यहाँ पर था ना, this one part and the other point. The 2 points, how closely we can see it distinctly on the object. That is called the resolving power. And that is proportional to the wavelength. Wavelength of what? Wavelength of the radiation that we are using to see that. For optical microscope, this is in the visible region. N is the refractive index where it is put. Sin alpha, let's not worry about it. That is the angle of incidence. We cannot do much about it. Of course, this is also a parameter in electron microscope, how far we put the object from the lens, or the object from the beam, that also, but we will not talk about that. Now, looking at the wavelengths, what we have for optical wavelengths is typically in the region of 400 to 750. You can see two objects separated by approximately 0.25 micrometer using an optical microscope. Okay? मतलब एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से अगर कोई दो चीज बारीक चीज 0.25 माइक्रोमीटर से पास होंगे तो आप हमको उसको हम अलग अलग नहीं देख पाएंगे. जैसे हम ये दीवार को देखते हैं, उसमें बड़े सारे रेत चूना ये सब है, लेकिन हम उसको अलग अलग नहीं देख पाते, हमें वो बड़ा स्मूथ लगता है. लेकिन जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बड़ा बड़ा दिखेगा ना, ऐसे उसके कण दिखेंगे. और अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो और बहुत बारीक की चीजों को, बारीक बारीक फीचर्स को दिखाएगा, जैसे हम यहाँ देख रहे थे. ये अपने सिर्फ आंख से देख रहे हैं, इस बाल में तो बहुत फर्क हमें नहीं दिख रहा, लग रहा है बड़ा स्मूथ सा. और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में थोड़ा फर्क दिख रहा है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखो कितनी सारी इसमें बारीकी दिख रही. सो दैट इज हाउ वी कैन हैव a resolving power at our wish, that a small resolving power or a higher resolving power. How much detailing we want, we will come one by one. This is we should remember that how much distance we can resolve depends on the wavelength and the refractive index in which we see. Now let us talk about optical microscope. We all know about it. This is the typical simplest form of microscope. You can see the lens. लेंस ऐसे बड़ा करके देखते हैं, वो धूप की रोशनी को फोकस करके वो कागज जलाते हैं. ये सारे सपने हम लोगों ने किए हैं, आप सब भी करते हैं. तो ये एक माइक्रोस्कोप है. क्यों? क्योंकि एक ये ऑब्जेक्ट है और इसका एक ये इमेज बड़ा सा यहाँ पर दिख रहा है. ठीक है ना, ये आंखों से हम इसको यहाँ तक देख सकते हैं, ये हम सब जानते हैं. अब सेम चीज को हमें और बड़ा करना है तो कैसे करेंगे? तब हम ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, जिसमें कि इट इज अ सेट ऑफ टू लेंसेज एंड यू हैव ए ऑब्जेक्ट. ये छोटी सी चींटी का एग्जांपल है, एक छोटी सी चींटी, और उसको हमने ये दो लेंस की सहायता से कैसे इसको मैग्नीफाई करके इतना बड़ा. लेट अस नॉट put more time on this, because this ray diagram and all we know. And in last lecture when we were the talk was on total internal reflection and the geometric optics and wave optics, all these things were discussed. So we know how these ray diagrams are formed and how a small object can be seen as a magnification. Again, coming back to this resolving power, that this objective, the objective of this microscope, it has a limitation, that how much detailing you can have a look at the on the object, and that is restricted by this, the wavelength and this refractive index. So in optical microscopes, what you can do, there are two tricks can be done. If I have only optical microscope, the trick is you use a blue light. Okay, सेम सेम रिजॉल्विंग पावर, आप उसको अच्छे से रिजॉल्व कर पाएंगे अगर आप नीले रंग के रोशनी में जिस चीज को देखें और
उसको किसी ऐसे ऑयल में डिप कर दें लेंस को जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, तो रिजॉल्विंग पावर क्या, वो छोटी छोटी डिस्टेंस को आप मेजर कर सकते हैं। तो ये तो थी ऑब्जेक्टिव, ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप विच most of us, all of us know that how an optical microscope. Now we came to, the scientists came to the limit that you can have a resolution of only this much distance. You cannot see things in between this distance, which is the limit of the optical microscope. Why? Because it has a wavelength which cannot go less than 400 micrometers. So if we reduce, or if we have some arrangement, if we have some setup similar to the optical wavelength, optical microscope, कि इस तरह एक लेंस है, ये दो लेंस का सेट है, और इधर एक ऑब्जेक्ट है, और अगर हम इसी में कोई वेवलेंथ ऐसा ले लें जो कि ऑप्टिकल वेवलेंथ से बहुत छोटा वेवलेंथ हो, तो क्या होगा, फिर हम और डिटेलिंग के साथ उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब वो वेवलेंथ कहाँ से आएगा, ये आप सब ने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, जो नवीं में है वो आगे पढ़ेंगे। डिब्रोगली रिलेशन है कि इफ इन मैटर मूव्स, then it has a wavelength. And how much is that wavelength? Is the h by momentum. Wavelength is given by the Planck's constant divided by the momentum. So if something is moving with this velocity, very high velocity, then my wavelength will be less. So here in optical microscope mein kya tha? The radiation that we were using to magnify or to resolve the particles on the details on the surface, that was limited by the wavelength of light, which was approximately 400 nanometers or 0.4 micrometers. And we cannot do much about it. So now we have, suppose if we have an electron and it is moving with a speed that if we can control, by controlling this speed or energy of this electron, we can tune its wavelength. And this wavelength can go far less than the ऑप्टिकल वेवलेंथ्स। सो हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन बीम लिया, उसको अब कैसे हम उसकी एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको हम मैग्नेट में रखा, उसके एक्सेलरेट कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा कि उसका वेवलेंथ कम हो जाएगा, और हम डिसाइड कर सकते हैं उसका वेवलेंथ कितना। अब हमने क्या किया कि हमने 1 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का इलेक्ट्रॉन बीम, ऐसा इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी फिक्स की, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी इतनी फिक्स कर दी कि वो उसका वेवलेंथ इतना हो गया। अब उसी फार्मूला से जो रिजोल्यूशन पावर का जो कितना डिस्टेंस हम रिजॉल्व कर सकते हैं वो कितना हो गया, 0.25 नैनोमीटर, मतलब 2.5 एंगस्ट्रॉम, इतने कम तक हम चले गए। उसके बाद तो यही है, जैसे ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में देख रहे थे वैसे ही हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। फर्क क्या रहा, सिर्फ इतना क्या कि first we were using the optical wavelengths for magnification and resolving the particles which were present on the any surface which we wanted to see close by. Now we are using an electron beam, and de Broglie says that there is a wavelength associated with that. So that wavelength we are using instead of the optical wavelength, and then I can resolve up to 0.25 nanometers. Okay. Let us just compare before we go to the ray diagram and all. There is one more aspect that we need to take care. But before that, let us compare. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में कितना मैग्निफिकेशन कर सकते हैं, 2000x। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में गिनिए कितना कर सकते हैं, 10 लाख। और रिजल्ट ये 200 नैनोमीटर तक ही देख पाएगा, वो भी एक्सट्रीम बता रहा हूँ। दी बेस्ट, आप अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऑयल डालिए और वेवलेंथ डालिए, और ये देखिए कितना 5 एंगस्ट्रॉम तक का इमेज कहाँ बनता है, इलेक्ट्रॉन बीम में। ये इसका एक कंपैरिजन है। और यहाँ देखिए कीमत, ये 10,000, आपको 1000 2000 का भी मिल जाएगा, पर 10,000 से 1 करोड़, 1 करोड़ सिर्फ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो आपका ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो बताएंगे बाद में, वो तो 10 करोड़ 20 करोड़ तक का आता है ना। अब वो कीमत किस चीज की है। अच्छा, अब जरा सा हम फिर वापस से ऑप्टिकल यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर क्या था, ये लेंस था,
किस चीज का ये लेंस बनता है? ये बनता है ग्लास का। ग्लास का कैसे क्या होता है कि रोशनी उसमें से आर पार जा सकती है। अब क्या है, अब हम क्या यूज कर रहे हैं? अब हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन की बीम तो क्या है, इलेक्ट्रॉन में सब है, मास भी है, वो मूव भी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। अब वो क्या लेंस, क्या ग्लास है, उसमें से पार आर पार जाएगा क्या? वो नहीं जाएगा। उसको फोकस कैसे करेंगे? अब आप लोग खुद बता देंगे कैसे फोकस करेंगे। फोकस करने का क्या मतलब है? मान लीजिए बीम ऐसे आ रही थी, अब हमको इसको से फोकस करना है। तो जब लाइट की बीम आ रही थी तो हमने तो यहाँ पे वो लेंस लगा दिया, उसको फोकस हो गया। अब कैसे हम इलेक्ट्रॉन बीम को कैसे फोकस करेंगे? ये एक इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, हाँ? अब ये इधर उधर जा रहा है, इसको कैसे फोकस करेंगे? आप सामने पढ़ा होगा ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, किसी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और हम वहां पे एक मैग्नेट रख दें, तो वो कैसा होता है? वो मूव कर जाता है, मुड़ जाता है ना। इसी प्रिंसिपल पे यहाँ पर एक मैग्नेटिक लेंस लगाते हैं, जो लिखा है ना कंडेंसर लेंस, ये बीच में खाली होता है और ये एक मैग्नेट होता है। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड डिजाइन करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे थे वो फोकस हो जाए, है ना। तो the glass is now replaced by magnetic lenses. So similar, all principle remains the same of transmission electron microscope. Same principle with as of the optical microscope. Only two things changed. What? The source is now of electron beam instead of optical ray, and the optical beams, the light was getting focused using lenses, made up of glass. Here, the electron beam is being focused using this condenser lens, which is of electromagnetic. And then you have a sample, and all these lenses are there for different purposes. You have to focus, defocus, put on image, and there is a screen where you will get the image. This is the same. This is just the light microscope and the electron microscope. They are similar. Okay. Again, just to summarize, the working principle of TM is the TM operates on the same basic principle as of optical microscope, but uses electrons, right? The wave associated with the electrons instead of light. The electron beam is accelerated through high voltage and passed through specimen, which I just talked about. And then the small volume, it will just make an image, similar to the electron beam, okay? This is same I already talked about. Let us see how we can see the things using this. This will be this you will be interesting. This is just a spherical nanoparticle of niobium oxide. This is a typical cell, and again this coronavirus. I took it from a science magazine. The first report when this coronavirus was seen using electron microscope. This is that first image. We all have seen. I'm just talking about the detailing that I just mentioned, that if we use electron beam where the wavelengths are very small in comparison to the optical radiation, we have we can see more detailed features on the cell. So what in the right hand side, what you see is the mitochondria. You all must have drawn in your biology. This is how the mitochondria we draw, right? And the left hand side is the electron microscope image of the same mitochondria, right? It looks similar. So going into the detailed structure, when we see using electron microscope, these kind of drawings are made. This looks ugly, but a lot of details are there for scientists who actually want to see the mitochondria. These are some nanostructures, nanowires grown in my lab, which you can see these rods, see 50 nanometer, 20 nanometer, and these are the inside of that that nanotubes, nanowires. This is what I just wanted to show, that what are these typical sizes that we can see using electron microscope. Okay. Now, second comes the scanning electron microscope. Here, both of them are electron microscope. Let us summarize the first two. Optical microscope, we all know. Same thing, you replace the optical beam by an electron beam, and accordingly engineering for focusing the things. That becomes a transmission electron microscope. अब transmission electron microscope में क्या होता है कि उसमें the specimen need to be transparent, means the electron beam should be able to penetrate it.
otherwise you won't be able to see. But scanning electron microscope has a different principle. We will talk about this. ये थोड़ा सा indirect method है किसी चीज को देखने का. एक तरह से ऐसे इसको कह सकते हैं कि आप ऐसे हाथ से टच करके ऐसा बनाते हैं ना, अच्छा यहाँ हाथ पे हाथ को ऐसे फेरे तो आता है ना, अच्छा हाँ यहाँ गड्ढा है, यहाँ ऊंचा है, यहाँ गड्ढा है, तो कुछ कुछ इस तरह का है. वो डायरेक्ट ऐसे देख के जैसा ना, ऐसा देख के नहीं बता रहे हैं इमेज. स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थोड़ा सा इनडायरेक्ट है. वो कैसे है वो भी बताते हैं. ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन. ट्रांसमिशन का क्या मतलब? द इलेक्ट्रॉन बीम इज ट्रांसमिटिंग. स्कैनिंग इज जस्ट इट इज स्कैनिंग ऑन द सरफेस. तो जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो पूरे मटेरियल का अंदर तक का फोटो बताता है. स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली shows you how rough or how is the surface. It only scans on the surface. Let us see. This is a typical structure. Here again the electron beam is used as the probe, not the optical. And there are these lenses, let's not worry about that. And there are different detectors. मैंने कहा ना जैसे हाथ से करते हैं, अच्छा हाँ यहाँ गड्ढा है, यहाँ ऊंचा है, ऐसा करके वो इनडायरेक्टली इमेज बनाता है. ऐसे ही यहाँ पे ये क्या देखता है वो हम बात करेंगे पहले. ठीक है. Before we talk about how the images are formed, let us see what are the things that happen when an electron beam falls on a surface. ठीक. अब कुछ अब देखो इसको. इलेक्ट्रॉन बीम है, बहुत सारा एनर्जी है उसमें. ये थोड़ा थोड़ा आप लोग जानते हैं इसलिए मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ. इलेक्ट्रॉन बीम पे सरफेस पे पड़ रहा है. एक इलेक्ट्रॉन बहुत एनर्जी से पड़ रहा है. आप लोगों ने पढ़ा ना एक्सरे कैसे बनते हैं. ये देखिए सबसे नीचे मैंने वो बनाया, उस पर हम बाद में आएंगे, पहले ऊपर आते हैं. इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी है. ये कोई मटेरियल है जिस पर कि वो इलेक्ट्रॉन पड़ रहा है. तो जो इलेक्ट्रॉन बीम, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम यूज हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन इस मटेरियल पे पड़ा. और क्या हुआ कि इस एनर्जी से उसने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया. जैसे कुछ स्नूकर खेलते हैं ना, बिलियर्ड्स, उसमें से गेंद रखते हैं, उसमें डंडा मारते हैं और वो उसमें से एक छिटक जाता है. ये ऐसा ही है. तो ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल जाते हैं. ठीक. एक प्रक्रिया ये हुई. ये कैसे माइक्रोस्कोपी में यूज होते हैं मैं बताऊंगा, ये आप जानते हैं ऑलरेडी. तो एक इलेक्ट्रॉन आया, इसने दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया. इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन. ठीक. अब दूसरी चीज क्या हो सकती है कि एक इलेक्ट्रॉन आया और क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का वहां पर इतना क्लाउड है. देखिए इलेक्ट्रॉन, एक तो इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है, एक जो सरफेस है, सरफेस पर भी तो बहुत से इलेक्ट्रॉन है कि नहीं. मटेरियल है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, किसी भी ना किसी चीज का मटेरियल है वहां पे. वहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें. मान लीजिए मेटल है तो इलेक्ट्रॉन ही तो है बहुत सारे. उस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन है कुछ वापस चले जाते हैं. बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन. मुझे याद है बहुत पहला वाला जहां पर कि सर बता रहे थे ना कि ये पॉजिटिव चीज आई और न्यूक्लियस से वापस चली गई, कुछ कुछ वैसा है. तो अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन वापस चला जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा. तो इसको कहते हैं बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन. तीसरी चीज क्या होती है, ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जैसा है कि मान लीजिए आप सब जानते हैं कि एक्सरे कैसे बनते हैं. कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन बीम आया, उस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया कि ऊपर के इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाला एटम के, एक अंदर के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया. वो हो गया आपका सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन. अब क्या हुआ कि बाहरी सेल से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और इस एनर्जी से एक फोटोन निकला, एनर्जी निकली. वो होता है ना एक्सरे. तो ये एक्सरे कितनी एनर्जी का होगा? यहां से यहाँ आने में इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी लगी उतनी एनर्जी का होगा. ये जो डिस्टेंस है आउटर सेल और एक सेल नीचे का, ये हर मटेरियल में सेम होता है क्या? नहीं होता है. तो एक्सरे की एनर्जी भी सेम नहीं होगी कौन सा मटेरियल है. तो उससे भी बहुत सारी जानकारी निकलती. ठीक. आगे हम जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कैसे वो काम करता है. एक बार थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम जब किसी मटेरियल पे पड़ेगा तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे. वो क्या है मैंने बताया. बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना था, कुछ तो वापस चले गए. और तीसरा कुछ जो है कुछ से वो एक्सरे जनरेट होगा. अब आइए हम देखते हैं क्या होता है. जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है कितने निकलेंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कितने जनरेट होंगे. तो जो नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन बीम और जो वहां पर रफनेस है, सिर्फ जहां पर इलेक्ट्रॉन बीम पड़ा है, तो वो जो एंगल है उस पर डिपेंड करता है. तो कितने सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकले और तो कितने एंगल पे वो पड़ा होगा ये हमको पता चल जाएगा. तो डिटेक्टर काउंट्स हाउ मेनी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स वेर जनरेटेड.
and based on that number it recalculates what would have been the angle between the electron beam and the roughness. तो इससे सरफेस का रफनेस और मॉर्फोलॉजी पता लग जाती है। मॉर्फोलॉजी मतलब यही कि कितना उबड़ खाबड़ है और कितना स्लांटेड है या कितना ऐसा है, सरफेस कैसा है। अच्छा, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन आप खुद सोच के बताओ, इलेक्ट्रॉन बीम जब उस पर पड़ा तो कितना बैक होगा। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा मिल रहा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बैक स्कैटर होंगे, और अगर यहाँ पर Z कम है, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है, तो कम इलेक्ट्रॉन्स वापस जाएंगे, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। तो कितने जा रहे हैं उससे हमें मटेरियल में पता चलता है कि कितने Z वैल्यू, पता है ना ये एटॉमिक नंबर, कि कितने सारे वहां पर हैं। तो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखें तो वी कैन नो अबाउट दी Z ऑफ द मटेरियल, मींस किस तरह का मटेरियल है। जैसे दो पास पास से अगर अलग अलग नंबर ऑफ बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन आए तो हमें पता चल जाएगा, अच्छा यहाँ पे भारी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एल्युमिनियम है, यहाँ पे कॉपर है, कुछ दो अलग अलग Z वैल्यू वाले एटम्स हैं। अब एक्सरे जो निकलता है, आप बताइए, जो एक्सरे निकला हमने यहाँ पर देख रहे थे ना कि ये इलेक्ट्रॉन ने इस खाली जगह को भर दिया, तो ये जो एक्सरे निकला इसकी एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है कि कौन सा मटेरियल होना है। कॉपर से जो एक्सरे निकलेगा, एल्युमिनियम से जो निकलेगा, मॉलिब्डेनम से जो निकलेगा अलग, और टंगस्टन से जो निकलेगा अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग एनर्जी के एक्सरे निकलेंगे। सारे एक्सरे की एनर्जी बराबर नहीं होती, तो कितनी एनर्जी का निकलेगा उससे हम मटेरियल के बारे में पता चल जाएगा हमें। तो इलेक्ट्रॉन जब सरफेस पर पड़ा, हम उसका सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन देख लें, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन देख लें और एक्सरे की एनर्जी मेजर कर लें, इन चीजों से उसका सरफेस का रफनेस, मटेरियल में कौन कौन से तरह के मटेरियल हैं, और दो अलग अलग तरह के कंट्रास्टिंग वाले एलिमेंट्स कितने वहां पर हैं वो पता लग जाता है। ठीक, तो ये बेसिक प्रिंसिपल आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट। हियर अगेन the images are made based on the indirect information that we get from the surface. Let us see that we can appreciate through these images. ये चींटी का सिर है, लेफ्ट हैंड साइड में जो है ना, ये चींटी का सिर है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं, आप लेंस से देखिए कितना दिखेगा, देखिए इतने कितने बारीक बारीक फीचर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ये उसकी आंखें हैं, ये चींटी का वो है सूंड, और ये चींटी का सिर जो हमें ऐसा स्मूथ दिखता है कि इसमें देखो कैसे लगता है जैसे इसमें बाल है। और ये जो नीचे बना हुआ है ये तो देखिए ये कार्बन क्लॉथ है, जो कपड़ा होता है ना अपना, एक रिसर्च में यूज होता है, कंडक्टिंग कार्बन लेते हैं, उस पर काफी कुछ कैपेसिटर वगैरह बनाते हैं, तो ये वो कार्बन क्लॉथ है। उसको देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखिए तो कैसा दिख रहा है, ऐसे कपड़ा बड़ा स्मूथ दिखता है। और ये राइट हैंड साइड में क्या है, रेड ब्लड सेल, हम सब जानते हैं ना कैसा दिखता है, चिपटा डिस्क जैसा। अभी दो तीन और आपको इंटरेस्टिंग चीजें दिखाता हूँ। ये देखिए तितली है, ये तितली जो ऊपर हमें इतनी रंगीन दिखाई पड़ती है, ये देखिए किस तरह से, इसको अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो ये कैसा दिखता है, ये इस तरह का दिखता है ना। अलग अलग तितलियों के अलग अलग एंगल से लिए हुए, ये देखिए इस तरह का पैटर्न। और ये इसमें कई बार इस कई तरह की चीज है इसमें, कई कहते हैं कि ये फोटोनिक क्रिस्टल्स हैं या कुछ, इन्हीं पैटर्न के इंटरफेरेंस से इनमें ये कलर्स दिखाई देते हैं, मतलब इनमें तितलियों में। ठीक है, उस पर और चीजें और बाद में पढ़ेंगे, और अलग अलग तरह की चीज उसमें हो सकती है कि उसमें तो पिक्सेल ही वैसे होते हैं, पिक्सेल नहीं पिगमेंट्स तितलियों में, और कुछ ये इंटरफेरेंस से भी दिखता है। ये देखिए, अब ये हम क्यों इसको देखना चाहते हैं, एक तो हमने ये देखा कि कलर क्यों इस तरह से है, इसके लिए हमने देखना चाहा कि जरा इसको देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है। अब ये क्या है पता है, ये है कमल का पत्ता। कमल के पत्ते पर पानी नहीं टिकता है ना, वो फिसल जाता है, वो पानी से गीला नहीं होता। तो ये कमल के पत्ते को ऐसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखे, देखिए इसमें ऐसे ऐसे बारीक पिन जैसी चीज, तो इससे क्या होता है कि जो पानी की बूंद उस पर पड़ती है ना, तो ये सारे उसको अंदर तक नहीं जाने देते हैं। हमने देखा है, ऐसे एक एक्सपेरिमेंट किया है ना, जरूर किया होगा। वो कील ऐसे रखते हैं और उस पर गुब्बारा रखते हैं, तो वो गुब्बारा उस पर सद जाता है, गुब्बारा फूटता नहीं जल्दी, और वो उसको अंदर भी नहीं जाने देता। तो इस तरह से ये पानी की बूंद को ये ऐसा रोक लेता है, अंदर पूरा उसको गीला नहीं होने। अब ये हम लोगों ने कुछ कुछ बनाए, देखिए ये नैनो वायर्स है ना, नैनो टेक्नोलॉजी में ये बहुत इस्तेमाल में आता है। ये सारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली हुई तस्वीरें। ये भी वही है, देखिए कार्बन आपको यहाँ दिखा है ना मैंने, कार्बन क्लॉथ,
ये कार्बन का कपड़ा है, कपड़े का रेशा है, और ये कार्बन के रेशे के ऊपर में ये निकल कोबाल्ट ऑक्साइड जो मटेरियल है वो चिपका रखा है। तो इसी फ्रेम में है, ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज है, ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली हुई इमेज है। ठीक है, ये भी कुछ तस्वीरें आपके लिए हैं कि कोबाल्ट ऑक्साइड टाइटेनियम ऑक्साइड के मिक्सचर का ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली हुई तस्वीरें। इतनी आप ऐसे सरफेस देखें तो आपको पता नहीं चलेगा। ये देखिए, ये आपको और अच्छा लगेगा, निकल ऑक्साइड है, इसको ऐसे सरफेस पे देखें तो पूरा लगेगा कि हाँ कुछ इस पर रखा हुआ है काला काला, लेकिन उसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखिए ऐसे फूल जैसा बना हुआ दिखता है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, हमने समझा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, उसमें देखा, फिर उसके बाद ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें हमने क्या बात की कि इलेक्ट्रॉन बीम जब चलेगा तो उसकी एनर्जी होगी, है ना, कितनी एनर्जी होगी, किलो वोल्ट, है ना, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम की आएगी, तब जाकर के उसका वेवलेंथ उतना कम होगा जो हमें चाहिए। अब मान लीजिए हमारे पास कुछ ये है पॉलीमर, प्लास्टिक है, अब इतनी एनर्जी पे प्लास्टिक का क्या हाल होगा, आप यू कैन गेस, राइट? सो वी कैन नॉट पुट electron beam, we cannot use electron beam to see very soft materials, right? So then what is the alternative? Now comes the other principle which can help us. And what is that principle? We, from Coulomb's law, we know that the force which is acting between two charged particles is how much? Is depends on the distance between the thing. So that principle is used in atomic force microscope. So what is the principle? The force that a probe, suppose I have a metal and there is a surface, how much force this will face depends on how far this distance, how far this probe is from this surface. I want to probe this surface, I want to know how rough is this surface, then accordingly I will put a probe. So this is a typical structure of an atomic force microscope. Since we know, let us see this graph. Since we know that the force between two surfaces depend on the distance, right? That's the basic principle that we know. In other words, if we measure the force, we can know how far the two surfaces are. And by moving this tip, we can make an image कि कितना वहां पर वो रफ है. So there is this very sharp tip, atomically sharp. And then you have this surface. इस पर एक लेजर डालते हैं. क्यों डालते हैं लेजर? इसलिए डालते हैं कि हमने क्या किया कि एक फोर्स फिक्स कर दिया. ये एक प्रोब है और ये एक सरफेस है, इस पर एक फिक्स कर दिया कि इतना फोर्स तुम मेजर करते रहो. जितना फोर्स, इतना फोर्स मेजर करने के लिए जितना तुमको पास जाना पड़े तुम जाओ. When then this tip reaches this surface and there is a laser which falls on this head. So now to maintain that force, this tip will move closer or it will move farther. इतना कम ज्यादा वो डिस्टेंस रहता है ना, इतना कम कि उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या एक लेजर इस पर मुड़ता है और ये रिफ्लेक्ट होके एक डिटेक्टर पे पड़ता है. तो ये जरा सा भी मूव होना टिप तो वो लेजर थोड़ा ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है. सो बाय लुकिंग एट दिस डिफ्लेक्शन, हाउ फार दिस टिप हैज मूव्ड, दैट वी कैन see. This is the calibration that how much tip to surface force is there and how much is the distance. So by measuring this force, we can know how rough the surface are. This is what I mentioned, that laser beam is used to detect this probe. This is called cantilever. Okay, and this is a typical image of graphene oxide. This doesn't look very great. So let us see here. In the one of the slides I mentioned about the carbon nanotube. कार्बन के बने हुए ट्यूब है ना. अच्छा, हम सब एक बात जानते हैं ना, we all know there is a benzene. Benzene ring is there, and then one more structure there. What does that become? Naphthalene. एक और लगा दो 3 तो क्या बन जाता है? एंथ्रासीन. 4 लगा दे तो क्या बनता है? टेट्रासीन, पेंटासीन ऐसा बनता है. And if we remove all hydrogen and only have carbon, that it becomes graphene. You all know graphite. So graphite is a bulk material.
remove all, there is only one surface, it is called graphene. And then if you roll this graphene, it becomes carbon nanotube. So this image in the right hand side is the transmission electron microscope image of carbon nanotube. And the left hand side is the AFM image or the atomic force microscope image of the same carbon nanotube. The right hand side is the atomic force microscope image of different polymers. I mentioned no, the AFM has an advantage if you want to see the soft material, tissue or polymers, where electron beam can damage these surfaces. So we use AFM. So these are the AFM images of these polymers. And polymer में क्या होता है कि बहुत सारा इतना लंबा चेन है, तो पूरा यहाँ पर दिखाई देता है. ये एक पॉलीमर का एक चेन है. मान लीजिए आप ये पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीस्टाइरीन का एक पॉलीस्टाइरीन है, ये इस पेपर से यहाँ से लिया हुआ इमेज है. तो एक पॉलीस्टाइरीन की एक जो एक पॉलीमर है, ये वहां पे दिख रहा है, देखो कितना बड़ा है. ओके, नाउ अभी तक what could we see? We could see only one few nanometer. अब हमें क्या देखना, मैंने अभी पेंटासिन की बात की ना, अभी मैं बहुत ज्यादा उसके डिटेल में नहीं जाते हैं. जो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप है, एक और चीज यूज होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम टनलिंग, मैं उसकी बिल्कुल बात नहीं करूंगा. वो एक प्रिंसिपल और है, उस पर काम करता है. एक नया माइक्रोस्कोप है, उसको कहते हैं स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप. ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, व्हाई आई वांट टू से दिस इज यूजिंग दिस, if we talk about it very briefly, is without touching the surface. Suppose I have this probe and this is a surface, I don't touch it, but still I see some current that is come through a phenomena called quantum tunneling. And how much that current will flow or the tunneling current will flow, that depends on the structure of this. Atomic force में क्या कहता है कि फोर्स मेजर करता है. अब फोर्स में क्या है कि अब जैसे अगर ये दोनों अलग अलग है, अब यहाँ से और यहाँ में और टच करने में कितना डिस्टेंस है, इसमें वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता. सो द फोर्स, दिस what the force it feels here and here, it may not distinguish well, but the tunneling current that comes from here and here, it can distinguish. So it gives a better resolution in STM or scanning tunneling microscope. And using that, this is how you can see the surface. Let us see some of the images. See, I talked about graphene. No? So ये ऊपर क्या है, ग्रेफीन देख रहे हैं, सारे कार्बन 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 ऐसे मिला हुआ है, और ये उसका स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से लिया हुआ इमेज है. जैसा हम लोग बनाते हैं ना, एटम कहाँ है, ये कार्बन एटम, वो कार्बन एटम कहाँ कहाँ ऐसे रखा हुआ है, ये उसका स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से लिया हुआ इमेज है. जैसा हम चित्र बनाते हैं ना, बेंजीन कि एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, तो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से वो एग्जैक्ट वैसा ही दिखता है. चलिए, ये तो था ग्रेफीन. राइट हैंड साइड में क्या है देखो, ये है पेंटासिन. अभी मैंने बात की ना पेंटासिन, तो ये पेंटासिन का स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से लिया हुआ इमेज है, ये नीचे सी में. तो एग्जैक्टली व्हाट वी सी, व्हाट वी ड्रॉ, दैट यू कैन एक्चुअली सी यूजिंग स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप. सो फ्रॉम आईज, आंख इज वी कैन सी माइक्रोस्कोप, पास से दूर से देख के थोड़ा क्लियरली देख सकते हैं. देन वी टेक लेंसेज that we can see smaller feature. Then we go to compound microscope, but then we reach a limit. That is restricted because of the wavelength of the optical radiation. So we came to electron microscope. So electron microscope were also to a direct method and an indirect method, scanning electron microscope and transmission electron microscope, where we could see very clear features of up to approximately nanometer range. Then we came to atomic force microscope, where the probe and this thing was there, probe and the surface, and we measured the force. Since the force between the surface and probe depends on the distance, we could know the roughness of the material and we can make a image. That was atomic force microscope. For further better resolution, if you want to see where the nucleus is, where the current is, where the atoms are, to see the atomic arrangement, we can see that using scanning tunneling microscope.
Okay, so that is, and the scanning tunneling microscope and atomic force microscope, they come under one category called scanning probe microscope. Okay, so this is how we can see that the modern microscopes, where we can see the detail up to the atomic level, and this is how they function. Okay, so with the scientific content is now over, let us have some poetry, because I was talking about the quantum theory and all this. तो इसको करें, एक दो कविताएं पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन, फिर जरूरत पड़ी तो एक दो कविताएं और पढ़ें. और ये देखिए कि एक यहाँ पर यूनिट का कन्वर्जन है, ये भी आपको याद रखने में आसानी होगी. इसको ऐसे पढ़िए. क्वांटम की थ्योरियों से सराबोर हो गए, फर्मी डिराक बोर पढ़ के बोर हो गए, न्यूटन बेचारे सर पकड़ के सोच रहे ये, न्यूटन बेचारे सर पकड़ के सोच रहे ये, 133 पास्कल कैसे टॉर हो गए. पता है ना, 133 पॉइंट समथिंग पास्कल का एक टॉर होता है, दोनों ही प्रेशर के यूनिट्स हैं. तो ये तो आपकी हो गई कविता. अभी कुछ डिस्कशन करें, फिर दूसरी कविताएं बाद में सुनाएंगे, ठीक है ना. चाहिए एक और सुनाता हूँ, ये अच्छा है. इसमें न्यूटन्स लॉ भी आता है और थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी आती है. ये सुनिए. इसी नंबर को अगर परसेंटेज बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 0.2 को परसेंट बनाना है तो 20% होता है ना. तो ये इसमें चार बातें, इसमें ओम्स लॉ भी इसमें आता है. 100 से गुणा करो तो वो परसेंट बनेगा, बेस फैट मिल के डिटर्जेंट बनेगा. है ना, सही है केमिस्ट्री, ये मैथमेटिक्स. 100 से गुणा करो तो वो परसेंट बनेगा, बेस फैट मिल के डिटर्जेंट बनेगा. ओम सेम गर हो तो कहते हैं ओम ये ओम कहते हैं कि अगर रेजिस्टेंस सेम हो, ओम सेम गर हो तो कहते हैं ओम ये, वोल्ट बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्ट बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, 100 से गुना करो तो वो परसेंट बनेगा. ठीक है, थैंक यू. मेरे ख्याल से ठीक है. Yes, sir. Now we have a Q&A round. So Yes. if you have any question, you can ask. Yes. Hello, sir. Yes. In the electron microscope, from Yes. where the high amount of electrons are generating? Okay. See, I wrote a term that is a very general term. It doesn't say anything about the technology. The electron beams come from, there is a filament which is made up of tungsten. Okay. So there is a tungsten filament, and it is heated also, and this is called field emission. That if you apply a very high voltage and you put something here, then these electrons move from there. Okay, so that electron moves from there, it leaves the surface, you heat it. Have you heard of this term called thermionic emission? If you heat something, if you heat a metal, its electrons gets loosened up and it just leaves the surface. The energy which is required, that is required to hold this electron to the surface, if you supply more energy and you put a voltage above that, then this electrons leave, right? So then this these electrons will move out of that. So if you use earlier technology, this filament of tungsten was used, it was heated and a voltage was applied, then these electrons move from the tip and then it just is taken away by this voltage. That's how the electron beam is created. Okay, is that okay, Jaydeep? Okay, sir. Okay. Yes. Uh, So and that sir, is yes, and now it's there are newer technologies are there where instead of tungsten there is a porcelain kind of material is that's called lanthanum hexaboride. That material, it's with different technological aspects were there, because if you use metal,
we all know the heating effect of metal. Because of that, these filaments become saggy. So these need to be replaced several times. So now the lanthanum hexaboride are used, but the principle remains the same. Okay. Sir, may I Okay, ask sir. the question? One more. Hello. Okay, there is a follow-up question, Jyoti, please. Yes. So what happens after the what happens with the electrons after the UV? Okay. So the electrons, suppose it hits this subsurface, then there is a channel that there is a current flow is maintained inside the surface. Okay, and that's how. Just since you have asked this question, it also limits. If it puts a limit that what kind of materials we can see. If the surface that you want to see is conducting, so if electron falls on that, then all these is okay because it is conducting. But if your material is not conducting, suppose it's oxide, electrons cannot flow on there, then it's difficult. Then what needs to be done is you put a metal coating on these surfaces, then only these electrons can conduct. So at the end, it has to conduct and it has to be to be fed back to the filament. So these are all technological aspects. The principle wise, it's the things that I discussed. Okay. Okay, sir. So one more question beyond this. Another question. Mhm. Uh, what is the exact reason for showing the property of charge of some particles such as electrons or protons? I could not get the question. What is the basic reason of showing what? Uh, Showing the property of charge of some particles such as electrons or protons. What is the origin of charge on any material? Yes, sir. Yes. See, there are a few things which I will say that basically we know that they come from the fundamental things are there, no? Like for mass and all this. So charge is one of the fundamental properties of these materials. And then it comes, if you go to the basic fundamental, what are the constituents that they are made up of? Then the answer lies there. It is an intrinsic property. It is, yes, and no, and the constituents that these charged particles are made up of. There are a list of fundamental particles which contribute to all these properties that we see in any particles. Okay. Sir, I have a Yes. question regarding that X-ray emission, Yes. if you permit. Yes. We know the electromagnetic spectrum, and X-ray lies on the one extreme where the wavelength is very Yes. small and corresponding energy is very high. Now, when the Yes. electron makes transition from second orbit to first orbit, as you mentioned, the energy Yes. difference corresponds to something in EV. So that energy Yes. difference will not give the wavelength corresponding to the wavelength of X-ray region in the electromagnetic spectrum. Yes. So it is not That clear you to can me. right. So that if you go to the basics of that, X-rays are what they are if we talk about the energy of one photon, and then we see how the beam energy is there, that can be controlled, and different materials that all these calculations you can have a look from the basic textbook formula. And then also these if you talk in a different term, the X-rays are what they are called inverse photoelectric effect, right? In That's true. photoelectric effect, what That's true. happens? I think if you just go have a look at the basics, that will be clear. Okay? But Yeah. actually, it is not X-ray photon. It is a photon, May- definitely, but energy, I think, is comparatively less. May I add something? Yes, Sure. please, sir. See, the energy difference between the n equal to 1 orbit and n equal to 2 orbit, that depends on how heavy is the atom or the nucleus. For most of the metals, this energy difference will not be in electron volts, it will be in kilo electron volts. For hydrogen, yes. For hydrogen, it is 10 electron volts. Yes. But as Definitely. Z increases, this energy differences increases. I believe, Dr. Rajesh, you correct me Yes. if I'm wrong. It increases Z square.
square. Yeah, Mosley is So even if Z is equal to 10, it's 100 times of hydrogen. Hydrogen itself is 10 eV. yes. So The the copper, energy difference is indeed in kilo electron volts, and the corresponding photon energy is also like that, and wavelength will be in the X-ray region of electromagnetic waves. Okay, okay, sir, got it. yes, yes. Because there the target is used as the copper, and that wavelength is, I think, one angstrom. The wavelength is 1 angstrom, and from there you can calculate what would be the energy. The wavelength of the X-ray that is emitted from copper, from the K12 transition, it's called copper K alpha. That is 1 angstrom. So they Okay, are sir. in these energy range. Yes, sir, got it. Thank you. Okay. Yes. Sir, may I ask a question? Yes, yes, please, Shreya. So in scanning electron microscope, you said that we detect secondary electrons and backscattered electrons. My question is, how do you differentiate between them? That's a very good question, I would say. Let me show you which I had here. Wait, I'll just show you. See, it's the position where you detect them. I'll just show that slide. That will become very clear. The backscattered electron, as the name suggests, is just at the back of that, at a 90 degree of the beam. See here. See here, the detector where you put the backscattered electron, if you want to detect, you have to put it just above the sample where the beam is hitting and it is backscattered. So you see how many electrons are coming here. And then the backscattering electron, they come here. So from the detector where you put them, right? So if you put it here, the detector detects the backscattered electrons. If you put it near the surface, the secondary electrons are mostly here. All these studies have been done to understand where the secondary electrons are more in number, or how the number of secondary electrons vary depending on the angle on the surface. Okay. So if you want to see the backscattered electrons, detector will detect. See, detector is everywhere. You can detect, and then from there it can distinguish whether that's a backscattered electron or it's a secondary electron. Okay, is that okay? Yes, sir. Thank you. Thanks. Excuse me, sir, I had a doubt. Can I ask it? Yes, please, Kunal. If I know, I'll answer. Yes, sir. Sir, the doubt was like in the AFM you mentioned, it has a needle-like aperture there if you can like show the diagram. So if Yes. that whole area is to be determined, that how is its morphology kind of thing. So how do we Yes. determine with indeed that like in that single needle? Yes, yes, exactly. See, the tip that you see, actually, if I can, if you search some images, I should have put it that if you see the scanning electron microscope image of the tip that is used, it Yes, sir. actually shows it's only a few atoms near the tip, and that is the region, one of the reasons it increases the cost. The diameter of the tip, suppose this is the tip, whether it is this sharp or this is even more sharper, that decides also the resolution of the AFM image, and that also restricts the image. As I was mentioning when I was talking about the scanning tunneling microscope versus atomic force microscope. So that's where the scanning tunneling microscope has the advantage, because it doesn't take it doesn't take care of the force, rather it takes care of the current. So force which is there, the टिप से बड़े साइज का फीचर आपको नहीं दिख सकता, इनफैक्ट उससे कई गुना बड़े फीचर से जब छोटे फीचर आप नहीं देख सकते एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप. You are right that the tip is a factor which decides the resolution of the atomic force microscope. You are right. Yes. Okay. Okay, sir. So like with that small tip, we can just determine the area or like the morphology of that particular area only, but not the Yes. whole area of that particular material. हाँ, देखिए एक चीज और होता है Yes, sir. यहाँ पे. There is Yes, sir. a relation.
See, if you want to see a larger magnification, you cannot see whole of it. Okay, na? In universe, we can see the whole lot of Yes, sir. light years distance, Yes, sir. a wide area. But in electron microscope, you want to magnify. Suppose मैं अगर उसको 1,00,000 गुना कर दूं और मेरे पास 1 सेंटीमीटर का है, तो 1,00,000 गुना करके कितना बड़ा हो गया वो? इतना बड़ा नहीं देख सकते. रादर हम एक कुछ 1 माइक्रोन बाय 1 माइक्रोन का एरिया देख सकते हैं. So 1 micron by 1 micron we can see as a suppose 20 centimeter by 20 centimeter image. Okay, so छोटे से एरिया को ही बड़ा करके Yes, sir. हम देख सकते हैं. And that of Clear, sir. course is right. Thank you, sir. Okay, Kunal, thanks. So do we have any other question? Hello, sir. There were some on the chat. Yes. Hello, sir. Yes, Jyoti. Right. Yes, Jyoti, please tell. Sir, I have a question related to light. May I ask? Yes, please. Suppose there is a object which has a special character that it reflects about 12,000 angstrom of wavelength of electromagnetic wave when the sunlight falls on it. Now the wave. Repeat the question. I just somehow missed something. Yeah, please. Suppose there is a object which Okay. which reflects about 10,000 angstrom wavelength electromagnetic wave when the sunlight falls on it. Now, if then after reflecting the light, if it comes in my eye, then what will be my visual experience? Will the object be black or colorless or colorful or what? No. Color, I think there is a very good video by Verma sir, that when we talk about wavelength and the color, we are just saying the science and the language issue. In science, we say that a wavelength, and language, we say that as a color. Okay. So wavelength, if your question, I will put it in a different way. That at 10,000 angstrom wavelength when falls on eye, what happens? That will have its energy, and it will have it's a very large wavelength. It is like radio wave falling on us or falling on eye. What do we feel? We feel nothing, right? And the radio wave has a what wavelength? We all know it's a microwave range and radio wave range. That the wavelength is there. So it's not even necessary to fall on the eye. So a wavelength which is falling somewhere, the eyes will sense these 400 to 700 wavelengths, and it will look that okay, we can see something, right? A wavelength of that electromagnetic radiation of 10,000 angstrom falling on our body, it's we can see, calculate the energies, and I don't think it will mean anything to say or associate any color associated with that, because the colors we identify between 400 and 700 what we can see using your eyes. है ना सर? ऐसा ही वेवलेंथ वाली एक मैंने वीडियो मुझे याद है आपका. बिल्कुल ठीक वर्मा है. सर, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो था वो. जी सर जी. Yes. Okay. Hello, sir. Yes. So it cannot be colorful, but will it be black or colorless, something like this, or Colorless and black? Colorless and black, something again. I think it is nothing. We cannot say black. You can say black. Of course, we cannot say it transparent. It is black. Black means you don't see any color coming to your eyes. Black, something appears black. See, listen. Let us fix this. Something appears black means nothing of radiation between 400 and 800, suppose, is falling on our eyes after reflecting from there. If this is happening, it will appear black. If only 10,000 angstrom is falling on our eyes, okay, yes, it is black. Okay. And here electron detector, when we say electron detector, it's not the eyes that we see. It's a different kind of detector where electron energies are read and the images are formed virtually. It's just a converted image that we see. Okay.
Okay, sir. Thanks. Okay. Uh, Sir, I had another doubt regarding refractive index. Can I ask it? Yes, yes, please, Kunal, boliye. Sir, if we can imagine two materials or even one material with refractive index to be 0, so our vision or what would be our detecting of a particular object in that particular medium? No, no. You tell now what is the meaning of refractive index n equal to 0? Hmm? N equal to 0 means what? The speed, what is refractive index? Refractive index is the ratio of the speed of light in that particular medium divided by the speed of light in air, or other way around. In air Yes, sir. divided by Yes, sir. divided by speed of light in vacuum. Now, if this number is 0, we means what? The speed in that material is what? Infinity. यही मतलब हुआ ना? Yes, sir. आप बताइए, उसी में आ जाएगा जवाब. n is 0 का क्या मतलब हुआ? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, है ना? का मतलब क्या हुआ Yes, sir. कि स्पीड ऑफ लाइट जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, ग्लास में वो उतना कम स्पीड से जा रहा है. अब ये नंबर को हमने 0 कर दिया का क्या मतलब? स्पीड ऑफ लाइट इंफिनिटी है उस मीडियम में. यही मतलब हुआ ना कि नहीं? Yes, sir. अब इसका मतलब आप खुद समझाइए. कैसे समझें इसको? स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा किसी की स्पीड नहीं होती, है ना? Yes, sir. आगे का Yes, वैसे sir. क्वेश्चन क्या था, वो उस पर फिर सोचा जाएगा. कुछ और क्या था क्वेश्चन? Sir. हाँ, क्वेश्चन, व्हाट वाज द क्वेश्चन? दैट सपोज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 0, फिर Yes, sir. Then, like, what with the view of our object, we will like in व्यू that ऑफ particular ऑब्जेक्ट. medium. हाँ, नहीं Yes, नहीं sir. नहीं. हाँ, इसका तो कुछ और ही कहानी हो जाएगी. न होगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न ना स्पीड बजाइए. न स्पीड इन्फिनिटी होने वाली है, और न क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, क्या एक्सपीरियंस होगा, सवाल उठेगा. अच्छा, लेट्स सी. दिखना और समझना ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है. हमें क्या दिखेगा? दिखना मतलब क्या कि हम आंख से क्या, हम वट एवर वी आर रिसीविंग थ्रू आईज, दैट इज मीन बाय दिखना. और आंख की तो बेचारे की कमजोरी है. अभी देखो वहां पे वेवलेंथ दिखाया था ना. ठहरो ठहरो, मैं वो दिखाता हूँ आपको. स्पेक्ट्रम, इतनी सारी चीजें हैं, हमें दिखता जरा सा है. घोड़े का वो लगा हुआ रहता है ना, वो कुछ कुछ वैसा ही है. सी फ्रॉम दिस साइज, दिस ये देखो कहाँ गया, ये देखो यहाँ है ना. ये इतना डिस्टेंस है यहाँ पे, 100 पिकोमीटर से 100 मिलीमीटर, उस बीच में ये जरा सा विजिबल स्पेक्ट्रम इज देयर. 400 to 800, वो भी थोड़ा एग्जैजरेटेड व्यू ही है. 400 to 800 nanometer is the distance that we can, is the wavelength that we can see. तो दिखना का कंसेप्ट वही है कि appreciating the radiation that falls on our eyes. कुछ So, रेडिएशन. sir, if we हाँ, so sorry to disturb. Like, so if we go the other way around and go on increasing the refractive index of that, of that medium, then what would be the view हाँ. of object if we go in that way? अगेन हाँ, व्यू अगेन देखिए. व्हाट इज द व्यू मींस हाउ ट्रांसपेरेंट द मटेरियल. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या बताएगा वो? हाउ ट्रांसपेरेंट द मटेरियल विल बी. एक्चुअली which class you are in, Kunal? So like just I have given matriculation class 10. Metric. हाँ, so just keep a watch when you go and study x-rays. हाँ, Yes, sir. एक्सरे पे जब आप जाएंगे ना, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यू नो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन द वेवलेंथ. ये जानते हैं ना, पढ़ा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ sir. हाँ. सो वेवलेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है. तो एक्सरे का जो वेवलेंथ है, उसका वेवलेंथ बदल गया ना, है कि नहीं? तो सेम मटेरियल पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो जाता है. तो एक कंसेप्ट आता है कहीं पे. इफ यू आर इंटरेस्टेड, लेट अस नॉट टेक दिस आंसर. It is like an imaginary refractive index. So instead of transmission, it in a way it reflects. Okay.
Like, So if okay, you sir. increase, then the wavelength, suppose refractive index is 10, then the speed inside that is decreased by that factor. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Thank you, sir, for clearing it out. Okay, Kunal. Okay, any other questions? I think there were some on the chat. One question was this alpha. That is the angle on which this the light falls. It's a actually there the term is called numerical aperture. This is a common formula. The angle, how far the lens is, that angle with the normal. That is the angle. That needle aperture that is there. Yes. Why blue color is preferred in reasoning? Because the resolving power, that how closely things you can resolve, is directly proportional to the wavelength. And blue has the smallest wavelength, because if you want to see only through the color, it's through the optical wavelengths, then blue is the only smallest wavelength. Acha, you remember there were this technology of Blu-ray CD. Huh? You know, CD DVD जब ये आ रहे थे, there was a disc with a higher density. They were Blu-ray DVDs were there. So there to write on the CD, the blue light was used, because there you can focus it also tightly. Smaller beam, the focus कितना so उसका size बनेगा, that also depends on wavelength. And same way, smaller wavelength you can focus on a smaller portion. So that's why blue light was done. Last question was how electrons get energy so that it revolves and spin, whether only surrounding thermal energy. How electron gets energy so that it revolve and spin. Again इसका क्या आंसर होना चाहिए? Electrons has these energies. How these atoms are prepared, I would say again inherent. Verma sir can help. In this, the question is where the electrons get these energy. Interesting questions. Sir, I have an answer. Okay, please help. As electron have potential energy due to nucleus, Mhm. and it has kinetic energy due to its motion. So it has possesses the total energy. Okay, so that's the electrons in the atom. I think that answer is for electron which is in the atom, right? The electron which is in the atom, that is bound with the nucleus, and that is the energy of the electron, which comes from the Bohr's theory. Okay. Yeah. Okay. The last question is when this circuit is completed, the flow of current would also produce a magnetic field. Wouldn't this interfere with the motion of? No, there are a lot of the things are there. To reduce that, you went a step further. Of course, flowing current will have a magnetic field, but these magnetic fields, a lot of things are taken care of. In fact, including vibrations and to nullify these magnetic fields, whatever little is created, all these are taken care of, and they don't disturb these imaging through electron microscope. सर पोएम मैं बची हुई 2-3 ही पोएम है वैसे, और हाँ बताइए सर हेलो सर, आपने जो आज पोएम से शुरुआत की बहुत ही अच्छा लगा सर. जो उसका रिदम था वो सुनने में बहुत अच्छा था सर. और कुछ हाँ, ऐसा 2-3 हो एक सर तो तो आप और है, जरूर कंप्लीट कर दें शेयर उसको फिर. कीजिएगा. हाँ सर, फिर प्लीज. ओके, 2-3 ही है छोटे छोटे, वो आपको कहाँ है, वो लास्ट में मैंने लिख के भी रखा था ताकि मैं भूलूं नहीं. Sir, excuse me, sir. हाँ, Sir, may प्लीज I कर. ask? यस Sir, प्लीज आस्क. सर आपने वो बताया था कि हम लोग का जो विजिबल रीजन है वो मतलब एक रेंज पार्टिकुलर रेंज है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक,
और उसके बाद कोई भी अगर रे हम लोग के आई में फॉल करता है तो हम लोग को कुछ भी नहीं दिखेगा, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब वो ब्लैक टाइप का दिखेगा। तो जो हम लोग देख, हम लोग के आसपास जो मटेरियल्स वो जो बने हुए रहते हैं वो हम लोग कहते हैं वो ब्लैक कलर का है। तो सर क्या वो मतलब वो हम लोग के विजिबल रीजन से बाहर के वो होते हैं? हाँ, ऐसा ही है। काले दो तीन देखिए मैं बताऊं, जिसको हम ब्लैक कहते हैं ना, इनफैक्ट ब्लैक का मतलब क्या है कि जो, और जैसे एक और चीज आप ध्यान रखिए, जब हम कहते हैं ना ये लाल है, ये हरा है, ये पीला है, आधी बात हम बोल रहे हैं। पूरी बात क्या है कि ये लाल हरा पीला अब है जब हम इसको सफेद रंग में देख रहे हैं। बात को समझ रहे हैं आप? यस सर। आप इस चीज को समझे। सेम चीज आप लोग दुकानों में जाओ ना कपड़ा खरीदने, वहां की लाइट में ऐसी लाइट वहां खरीद के घर आओ तो कभी रंग अलग दिखा है आपको? कभी थोड़ा बदल जाता है ना वो? दुकान में तो अलग कलर का है। हाँ, वो क्यों हुआ? कलर तो उसका वही था। लेकिन सेम चीज को जब आप व्हाइट लाइट में देख रहे थे, सफेद रंग में देख रहे थे, सूरज की रोशनी में देख रहे थे, तब हम बात कर रहे हैं जैसे पत्ता हरा है। आप रात में और कम रोशनी में देखो तो पत्ता हरा दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा। ठीक है ना, समझ रहे हो? फिर मैं आपके आंसर पर आता हूं। अब क्या है कि जो भी चीज आपको काला दिख रहा है, उसका मतलब ये है कि जितने भी तरह की रोशनी आसपास है वो उस पर पड़ के आपकी आंख तक नहीं पहुंच रहा, ठीक? या फिर वो वेवलेंथ पहुंच रहा है तो आपकी आंख से नहीं दिखता है ना? तो इसीलिए इसका ये मतलब है कि आपकी आंख के द्वारा देख सकने वाली वेवलेंथ उस पर पड़ के आपके आंख तक नहीं पहुंच रही है। जैसे नीले रंग है ना, आप ऐसा करके देखना, नीले रंग में सेम चीज को देखो, नीले रंग में नीला रंग की चीज कैसा दिखेगा, हरा पत्ता नीले रंग की रोशनी में कैसा दिखेगा, ये आप करके देखना। और लाल रंग की रोशनी में पीला रंग कैसा दिखेगा, ये सारे कॉम्बिनेशन बड़े इंटरेस्टिंग है। तो काले रंग का मतलब है कि आपकी आंख तक समझ सकने जैसा कोई रंग नहीं पहुंच रहा। ठीक, समझ गए? यस सर, मतलब कि हम लोग का जो वो देखने का कोई भी कलर का वो विजिबिलिटी है वो इन्वायरमेंटल वेवलेंथ पे वो डिपेंड करता है सर। इसलिए हम बिल्कुल लोग करता है। आम चाल की भाषा में ऐसा बोलते हैं कि मतलब वो रियल ब्लैक नहीं है, ये रियल ब्लैक है, बट हम लोग तो वो हम लोग के विजिबिलिटी पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये सारे जानवरों के लिए भी अलग है, हमें ये रंग दिखते हैं, कई जानवरों को अलग रंग दिखते हैं, अलग वेवलेंथ रेंज में वो देख पाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, सुना? ये कविता न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे है, सुनाऊं? यस सर। अगर नंबर 1 से कम हो, यू टेक ए स्क्वायर रूट, तो वो नंबर से बड़े बड़े आते हैं ना स्क्वायर रूट। पहली लाइन का ये मतलब है, सुनो अब इसको कविता के फॉर्म में। हो संख्या 1 से कम तो सभी घन मूल ज्यादा हो, कूल कम जूल ज्यादा, जूल कम तो कूल ज्यादा हो। क्या मतलब है इसका? जो चीज ठंडा है, कूल ज्यादा है, उसमें हीट कम है, और जिसमें हीट ज्यादा है उसमें कूल कम है, ठंडा कम है। इसका ये मतलब है। हो संख्या 1 से कम तो सभी घन मूल ज्यादा हो, कूल कम जूल ज्यादा, जूल कम तो कूल ज्यादा हो शीतल शीघ्र अंतर ताप का जिसमें महत्तम हो, बाह्य समताप में हो कूल जिसमें जूल ज्यादा हो। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और ये कविता एक साथ पढ़ना, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, ये कविता रहने देते हैं, अच्छा सुना देते हैं। ये अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही थी ना, ये उस पर है। प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। इसको ऐसे गाओ। जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया, वैसे वैसे ही क्वथनांक चढ़ता गया, वायु से पानी, पानी से शीशा सघन, यूं ही अपवर्तनांक बढ़ता गया। जैसे जैसे डेंसर होता जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। हवा से पानी, पानी से शीशा। ठीक, इसको पूर्ण विराम देते हैं। ठीक है विमल जी। Yes, sir. So I want to take a moment to thank you for
attending this insightful webinar on the basic working principles of. एक छोटा सा cosmic wave का I won't be able to answer that. Yes, sir. That is not at all related to what I know. Okay. Okay, Sorry. sir. Okay. No problem, sir. Jai Mataji, sorry. Yes. Yes, sir. You can continue. Yeah, I'm done. Okay. Okay. Thank you, sir. So, thank you for attending this insightful webinar on the basic working principles on the modern microscopes by Professor Rajesh Kumar from IIT Indore. This webinar was organized by Shiksha Sopan, IAPT and NANI, and we are grateful for their support in making this event possible. Professor Kumar shared with us his extensive knowledge and experience on modern microscopy and imaging techniques. His presentation was informative and engaging, and we learned about the basic working principles of different types of microscopes, as well as their applications in various fields. We were also fortunate to have Professor H.C. Verma sir, a renowned physicist and author. His insights and perspectives added value to this discussion, and we appreciate his contributions. I hope that this webinar has been beneficial to you, and you have gained new insights on the subject. As students of science, I encourage you to continue exploring the fascinating world of physics and to participate in NAEST 2023. NAEST provides a unique opportunity for students from classes 9 to 12, BSc and MSc, to showcase their knowledge and skills in physics. So gear up for the challenge and register for NAEST 2023. I am confident that this platform will provide a great learning experience and a chance to showcase your talent. Once again, I congratulate all the participants of this webinar and look forward to see you again on the upcoming webinar on uncertainty in physical measurements by Dr. Sarmista Sahu, retired Associate Professor of Physics from Maharani Lakshmi Ammani College for Women, Bangalore, and the coordinator of Ammani and Vishika, Bangalore, on May 13, 2023 at the same time. Thank you. Thank you very much.